Alaikum and good morning, listeners. I'm Aisha Siddiqa, your host for the day, with my co host Hamda Maham, and you're listening to FM 101.8. Assalamu alaikum everyone. This is Humda Mahamalvi and today we are here with a very special episode of our program. And before moving on, I'd like Aisha to introduce our respected guest. All right, listeners, our guest for the day is Mr. Bilal Bukhari, a known personality, and he has been dedicated to the field of higher education in Pakistan for more than 10 years. He has an MPhil in management sciences with a specialization in marketing. He has demonstrated leadership and expertise in various areas of academia, including executive administration, academics, student affairs, teaching, and pedagogy. Over the course of his career, he has taught and mentored more than 2,000 students, striving for excellence and a thirst for knowledge. He has been well rounded. Professionalism is evident in his commitment to positive change. So we welcome to our show, Mr. Bilal. We are very pleased to have you, and we have some questions regarding, education in Pakistan. Thank you so much, So Aisha, for having me today. It's a pleasure to have you guys. Thank you so very much again. thank you. So, sir, I had a question like to kick things off, could you please provide an overview to the current state of higher education in Pakistan and what are some of the key challenges it faces today? I think that's an excellent question to kickstart with. So, the higher education landscape in Pakistan has grown and shown significant growth over years, with an increasing number of universities and colleges. Today in Pakistan, we have more than 220 degree awarding institutions from far north of Gilgit-Baltistan to the arid deserts of Sindh and Balochistan. So, however, it faces several challenges, including access to quality education remains a huge concern due to limited resources and infrastructure. Insufficient funding is also a very major kind of hurdle. Outdated teaching methodologies, which we can witness, is still being practiced in a lot of institutions, and a lack of research opportunities are other key issues. Moreover, as we all have witnessed, the political instability and security concerns have also impacted this sector very much. So yes, you are right. There are challenges, but I truly believe there are also opportunities in the higher education of Pakistan, and there is a significant growth which can be done through the collaborative learning mindset between the academics, faculty members, and the students. Okay, thank you so much, sir, for giving such a beautiful answer to our question. Assalamu alaikum, sir. Walaikum My question is that in recent years, there has been a growing emphasis on innovation and technology in education. So, how in Pakistan higher education system is adopting to digital age, and what roles does technology play in shaping its future? Another very good question, and this is also very close to my heart because I have been working in this direction and trying to actually eradicate all the myths about adopting the new technologies in the higher education. Pakistan's higher education system is gradually adopting to a digital age. Online learning platforms and resources are becoming more prevalent, especially in urban areas. I would like to take you back 3 years in 2020 when the COVID hit us, and suddenly everything went off. और वहाँ पे एक बहुत different किस्म का एक scenario था जो कि हमने पहले कभी witness नहीं किया हुआ था. Particularly जब सारा lockdown हो चुका था, universities और colleges बंद हो चुके थे, and we were on the edge of something जिसका हमें कोई idea नहीं था कि how we'll take this thing forward. When and that very moment the technology come into play. The COVID-19 pandemic accelerated this shift towards online education, and technology played a very crucial role in expanding access to education, bridging the urban-rural divide, and providing innovative teaching methodologies. So टेक्नोलॉजी को हमने तब भी अडॉप्ट किया था और बड़े फराग दिली से अडॉप्ट किया था. हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल टूल्स को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया था.
बट वंस द पेंडेमिक वाज ओवर, वो सारी चीजें हम लोग शायद पीछे छोड़ आए हैं और उससे हमने सीखा नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज बीइंग अफेक्टेड। अगर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या कोर्सेज ले रहे होंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बट दैट्स नॉट द केस। आई मीन इन इन मेजॉरिटी केसेस ऐसा नहीं है। अक्रॉस द ग्लोब जो है वो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस की है, एंड द नेशंस आर एक्चुअली स्टिकिंग टू दैट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, जो कि शायद हम लोग उस तरह से उसको लेकर नहीं चल रहे। बट टू योर क्वेश्चन, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली very much significant to adopt these technologies and bring in inculcate in the higher education scenario of Pakistan. Well, yes, sir. I guess I would agree with you that I think it's more important that we, make ourselves to learn things from internet and whatever we have. I think Absolutely. it's a dilemma that we know that how to waste time and we don't know how to create things and how to make our future. So thank you so much, sir. No problem. Yes, sir. I have another question, sir. Like, one of the critical aspects of higher education is in ensuring accessibility and affordability. What initiatives or policies are in place to make higher education more inclusive for a broader range of students in Pakistan? Well, Aisha, this is again a very good question at this forum, because affordability and accessibility is one of the key challenges higher education is facing in Pakistan. And I can share this with my own experiences that a lot of areas in Pakistan don't have access to internet, which is really sad. और वहाँ पे जो वहाँ का जो स्टूडेंट है, जब वहाँ का जो यंग माइंड्स हैं हमारे, दे आर अनेबल टू सिक्योर देयर एडमिशंस इन गुड यूनिवर्सिटीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। और आई थिंक इस इशू को एड्रेस करने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स जो कि पर्टिकुलरली इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, to address the challenges of accessibility and affordability. Scholarships and financial aid programs can be introduced to support economically disadvantaged students. And of course, virtual learning platforms are helping students to access quality of education from remote areas. Again, ये जैसे हमने पहले बात की कि ये mindset की बात है, and we need to actually work on दिस माइंडसेट, जो हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उन लोगों को बताना है कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप ई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेल कर सकते हो। नॉट ओनली कि अगर आप इन पर्सन टीचिंग या इन पर्सन क्लासरूम्स में बैठकर आपको सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, दैट इज नॉट द केस एक्चुअली। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो दे आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। लॉट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज are working together. Recently, abhi just a year ago, HEC and HEDP came together and उन्होंने 13 यूनिवर्सिटीज का कंसोर्टियम डेवलप किया है, जहां पे वो 13 यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप करेंगी, which will be offered to every single individual who is inducting in the degree awarding institutions of Pakistan. सो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेसिबिलिटी को एड्रेस करने के लिए। और जहां तक बात है अफोर्डेबिलिटी की, तो आई थिंक हमारा जो हायर एजुकेशन का बजट है, वी नीड टू लुक इनटू दैट। हमें गवर्नमेंट और जो हायर एजुकेशन कमीशन है उस लेवल पे जाके चीजों को देखना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा टू टू लुक इनटू द डीपर रूट कॉज कि किसकी वजह से जो है वो एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। सो उसमें अगेन पॉलिसी मेकिंग, पार्किंग सम एक्स्ट्रा बजट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स, जहाँ पे जो ब्राइट माइंड्स हैं, जो यंग यूथ है हमारी, उनको हम किस तरह से जो है वो फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स के थ्रू इंडक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक इंक्लूसिविटी की बात है, और everyone should come together and think in the same direction. And inshallah, I am sure कि हम इस तरह के hurdles को बहुत अच्छी तरह से overcome कर सकते हैं। Yeah, very well explained, sir. Very well explained. Thank you. Hamda will, Thank you, sir. ask me. My question is that
as the job market is constantly evolving, how is higher education in Pakistan aligning with the challenging demands of workforce? And are there any innovative approaches to curriculum development and career readiness being implemented? Of course. I think that's another very interesting area to explore because the industry and academia gap are increasing day by day, which is not a good sign at all. And being an academic, I have witnessed this कि जब तक academia और industry collaborate नहीं करेगी, they cannot produce good graduates जो कि job market को बहुत अच्छी तरह से fulfill कर सकें. So, higher education institutions in Pakistan are increasingly focusing on aligning their curricula with the changing demands of the workforce. Vocational and skill-based programs are gaining importance to enhance employability. राइट सो यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको चाहिए कि वो फॉस्टर करें अपनी पार्टनरशिप्स को विद इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल आई हैव वर्कड इन लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान थ्रू आउट माय करियर एंड आई एम श्योर कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक प्लेसमेंट सेल करियर ऑफिस और सिमिलर जो है वो नोमेनक्लेचर के ऑफिसेज Yeah. ऑपरेट कर रहे हैं. But what they have to do is they have to periodically invite people from the industry to the university and ask for their demands और वो उस तरह से अपने करिकुला को ट्वीक कर सकते हैं. Recently I came to know कि Japan is looking for 1 million people with IT skills. जापान हम सबको पता है कि एक बहुत ही मेच्योर्ड इकोनॉमी है और बहुत मेच्योर्ड नेशन है लिटरली बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो एजेड हैं उनकी यूथ की पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लो. तो वो वहां पे इस वक्त जो है ना वो आईटी स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और एंड दे एक्चुअली रीच्ड आउट टू अस. आई मीन बाय अस आई मीन द हायर एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान कि हमें आप ट्रेंड जो है वो स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करें थ्रू डिफरेंट मीडियम्स एंड मोड्स. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये क्वेरीज आई हैं और उसके अलावा भी वैसे भी गवर्नमेंट लेवल पे भी ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू भी ये डिमांड जनरेट हो रही है. So what I'm emphasizing here, my point is कि हमें इस तरह की जो डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने करिकुलम को ट्वीक करने की और उसको अपडेट करने की जरूरत है. और जब तक हम ये चीजें नहीं कर रहे होंगे अपने एंड पे मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे फॉर दी पर्टिकुलर जॉब मार्केट. तो इट डजेंट मैटर कि ये आईटी सेक्टर की बात हो रही है या किसी और सेक्टर की बात हो रही है. सेक्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इवन विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड. बट द थिंग इज के वहां पे इशू जो है वो एक तो प्रॉपर स्किल सेट्स का आता है जो कि रिक्वायर्ड स्किल सेट हैं. शायद हमारे ग्रेजुएट्स वो इक्विप्ड नहीं है उन स्किल सेट्स को लेकर. दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो I'll urge every individual, every student who is studying right now to work on their attitude. राइट ये जो एटीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोगों को अपने एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है कंप्लीटली जब वो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और जब वो प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं. तो if they start working on their attitude and their behavior and their professionalism during their degree program तो वो एक full fledged equipped इंडिविजुअल होंगे जब whenever they graduate. सो ये चीजें हमें साथ साथ लेकर चलनी है. माइंडसेट्स को थोड़ा सा अगेन अवेयरनेस क्रिएट करनी है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग माय अंडरग्रेड तो मुझे भी शायद उस तरह से चीजें क्लियर नहीं थी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कि आगे क्या है और क्या नहीं और किस तरह की सीरियसनेस को अडॉप्ट करने की जरूरत है, किन एरियाज पे मुझे काम करने की जरूरत है. तो वो लैक ऑफ अवेयरनेस थी उस टाइम पे. लेकिन अब इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं जो कि एकेडमिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं. दे आर एक्सचेंजिंग नॉलेज, दे आर टेलिंग देयर डिमांड्स और वो अपनी सप्लाईज को ट्वीक करने की कोशिश करें विच इज़ अ वेरी गुड साइन. और आई थिंक इन फ्यूचर हमें इन्हीं चीज़ों की वजह से जो वो गैप है उसको हम इंशाल्लाह फुलफिल कर सकेंगे. Well, all right, sir. It means that we need to explore, we need to go out of the box. Absolutely. Like we need to leave those certain, very circled professions like doctors, engineers, and these kind of things. And now I think the new era
is not of just those very big, what we say, professions, but I think we need to explore some new dimensions which are not explored by our students so far. एग्जैक्टली एंड आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जो लर्निंग होती है वो जितनी क्लासरूम में हो रही होती है उससे कहीं गुना ज्यादा वो क्लासरूम से बाहर हो रही होती है। जब आप Yeah. प्रैक्टिकली लोगों से मिल रहे होते हैं, आप स्टार्टअप्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप रियल टाइम सिनेरियोज को विटनेस कर रहे होते हैं, उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं, एंड यू नो मेकिंग योर ओन अजम्पशंस ऑफ थिंग्स कि अच्छा ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, ये वैसे होनी चाहिए। क्लासरूम एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटीग्रल पार्ट, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो क्लासरूम के बाहर की स्टडीज हैं, जो करिकुलर और को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर स्टडीज हैं, वो सब हमें उसका एक मिक्स बनाकर लेकर चलना होगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। Yes, that's very well said, sir. Thank you. वेलकम। So, sir, it's an honor to be here with you. My last question from you is that we all know the international collaborations and partnerships, so how they significantly impact the quality of higher education in Pakistan. And could you share some successful examples of international collaborations in Pakistani academia and discuss their benefits? Yes, Aisha, thank you so very much for asking this question because I think international collaboration has also played a very vital role in improving the quality of higher education in Pakistan. Because अगर हम आज से कुछ साल पहले चले जाएं, not more than a couple of decades or 3 decades, तो हमारा education system was totally different from what West was teaching in their universities. और हमने बड़े रिसेंट टाइम्स में जो है वो BS 4 years को अडॉप्ट किया और डिफरेंट टूल्स को अडॉप्ट किया, डिफरेंट मेथडोलॉजीज एंड पेडागोजीज को अडॉप्ट किया। अभी कुछ साल पहले हमने फ्लिप क्लासरूम के मॉडल को अडॉप्ट किया। सो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज और अक्रॉस द ग्लोब कोलैबोरेशन विद द अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिल रही हैं। और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सिनर्जी क्रिएट हो गई है अराउंड द ग्लोब, जिसमें सब कॉन्टिनेंट एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज यहाँ की रिसर्च जो है उसकी साइटेशंस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई हैं ओवर द पीरियड। बहुत ज्यादा लोकल जो हमारी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोलैबोरेशंस स्टैब्लिश किए हैं विद देयर फॉरेन पार्टनर्स, जहाँ पे फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, रिसर्च और ग्रांट्स और इस तरह के डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर, डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर दे आर वर्किंग टुगेदर। सो विच इज आई थिंक वेरी गुड, क्योंकि जिस तरह हमें उनसे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, उसी तरह आई थिंक दे हैव टू आल्सो लर्न अबाउट the local context of South Asia and the Indus Valley का जो हमारी oldest civilization है, they are coming here and doing their research on these fronts और यहाँ के locals के साथ collaborate कर रहे हैं। बहुत ज्यादा grants की opportunities होती हैं faculty members के लिए कि वो बहुत ज्यादा जो foreign grants हैं वो avail कर सकते हैं। फिर इस तरह हमारे स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि वो या तो एक्सचेंज सेमेस्टर कर रहे हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, या फिर अपना जो हायर एजुकेशन है प्रोबेबली फॉर देयर मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड इवन PhD, वो इन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए दे कैन गो अब्रॉड। तो ये सिनर्जी और ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग मैं कहूँगा इसको, क्योंकि आप लर्निंग एक्सचेंज कर रहे होते हैं डिफरेंट फोरम्स पे, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे, आपकी फैकल्टी उधर जा रही होती है एंड यू शुड इनवाइट देयर फैकल्टी टू योर इंस्टीट्यूशन। तो ये इट हैज टू बी अ टू वे काइंड ऑफ ट्रैफिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमने बहुत सीखा है। इनफैक्ट जो हमारी जो जो बाहर की जो फॉरेन डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें शेवनिंग है और फुल ब्राइट है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो बहुत वाइब्रेंटली परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर सिक्योरिंग दीज स्कॉलरशिप्स। पिछले ईयर्स बहुत ज्यादा हमने नंबर इंक्रीज किया है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने टू सिक्योर दीज सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप्स हैं और दाद स्कॉलरशिप्स हैं, यूरोपियन यूनियन की बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। एरास्मस प्लस प्रोग्राम है जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की 4 यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है अलॉन्ग विद 4 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह के जो कोलैबोरेशंस हैं वो दे आर हैपनिंग एंड दे विल बी हैपनिंग इवन मोर इन द फ्रिक्वेंसी। इनकी फ्रिक्वेंसी मजीद बढ़ जाएगी इन द फ्यूचर, बिकॉज दुनिया की नजर इस वक्त ग्लोबल
एशिया के ऊपर है, साउथ एशिया के ऊपर है, बिकॉज ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव किस्म की जो है चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और हमारी पॉपुलेशन जो कि बहुत यंग पॉपुलेशन है, एंड द वर्ल्ड इज एक्चुअली लुकिंग एट अस कि ये इनकी यूथ जो है वो किस तरह से अपनी नेशन बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही है और करने वाली है, और किस तरह से Exactly. ये अपनी नेशन को जो है वो खड़ा करने वाले हैं। तो Yeah. trust me when I say this, everyone, in the global scenario is looking at this subcontinent, जहाँ पे वो दे आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग, वो आपके डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन के ट्रेंड्स को मॉनिटर कर रहे हैं। सो आई थिंक ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो एवरी इंडिविजुअल शुड अवेल इट। Yes, sir. And talking about international collaborations, I recently have been informed and I've been acknowledged about Coursera. You know, HEC has collaborated with the top universities in the world, and we can actually sit at our home and collaborate with their universities and get certificates. This is also a very big opportunity to avail, for students and for the faculty members of any university, of any college. And it's totally free. This is a Yes, big opportunity yes. for us. So thank you so Also, much, sir. also through Go ahead. HEC, HEC has also collaborated with Microsoft, जो कि Okay. आपको टेक्निकल स्किल्स के ऊपर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, and you'll Hmm. receive a certificate from the Microsoft in particular domains जो भी आप उनके साथ कोर्स ले रहे हैं ऑनलाइन। इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एडेक्स है। इनफैक्ट अब तो आई शुड टॉक अबाउट आवर लोकल प्लेटफॉर्म्स जो कि ई प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इलमैक्स के नाम से। Hmm. आरबी सॉफ्ट इज वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जो कि बहुत जल्दी हमारे पास Uh, अवेलेबल होगा फॉर ऑनलाइन लर्निंग। और वो आयशा भाई, मैं बात फिर दोबारा करूंगा कि जो ये मूक्स जो होते हैं हमारे मैसिव ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, ओपन कोर्सेज हैं, उनको लोगों का लेने का माइंडसेट हमें थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। वी शुड yes, sir. इनकरेज इंडिविजुअल्स के जी आप ये कोर्सेज जरूर लें। और इट्स जस्ट नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप बैठे हुए स्क्रीन को स्टेयर कर रहे हैं। वो बहुत इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं जहाँ पे Yes, sir. दे Sure. इंटरेक्ट विद आप डिस्कशन फोरम्स पे जाके उसको डिस्कस कर सकते हैं। दे टेक पीरियोडिकल क्विजेज जो कि आपकी नॉलेज को भी जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि ईदर दैट लर्नर इज एक्चुअली लर्निंग और नॉट। सो ये बहुत सारी चीजें आई थिंक टुगेदर वी कैन वर्क ऑन दिस। Yes, sir. Thank you so much for answering this. Thank you. नो प्रॉब्लम। Well, as we are heading towards the end of our program, I'd like to ask a final question, sir, that what are the key strategies and recommendations you would like to suggest for the future of higher education in Pakistan, and how system continue to evolve and excel on the global level? Well, that's again a very tricky question because इसमें बहुत कुछ है कहने के लिए। But I truly believe that to excel on a global scale, Pakistan higher education should prioritize some of the strategies, जिसमें एक तो शायद हमें अपने गवर्नमेंट लेवल और हायर एजुकेशन कमीशन लेवल पे we need to increase the funding and resources for research and infrastructure development. राइट ओवर द पीरियड्स हमने देखा है कि हमारा जो एजुकेशन का बजट है दैट हैज बीन स्टैग्नेंट फॉर पास्ट फ्यू इयर्स, और जिस तरह से उसको ग्रो करना चाहिए वो उस तरह से शायद ग्रो नहीं कर पाया। सो आई थिंक एक तो ये एरिया विच द पॉलिसी मेकर्स हैज टू लुक इनटू। उसके अलावा जो वी नीड टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म एंड द असेसमेंट टूल्स। I still remember कि when I was doing my undergrad, I mean ages ago, so वहाँ पे होता यह था कि हमारी मेमोरी को टेस्ट किया जाता था। हमें हमें हमारे क्विजेज और हमारे जो पेपर्स होते थे वो उसका उसका जो असेसमेंट का जो क्राइटेरिया होता था वो यही रहता था कि हाउ गुड एन इंडिविजुअल पोजेस देयर मेमोरी, राइट। आप कितना अच्छा रट्टा मार लेते हैं, आप कितना अच्छा याद कर लेते हैं। सो आई थिंक ये असेसमेंट टूल्स को चेंज करने की जरूरत है हमें, और वो ओल्ड स्कूल थॉट्स को शायद हमें पीछे छोड़ देना चाहिए और असेसमेंट के डिफरेंट टूल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उनकी हर इंडिविजुअल की एक डिफरेंट अप्रोच होती है चीजों को लेकर, तो हमें उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। एंड वी शुड आल्सो बी कॉग्निजेंट ऑफ इफ द इंडिविजुअल इज एक्चुअली लर्निंग समथिंग।
राइट? तो बाय द Yes. एंड ऑफ द डे जो आपके कोर्स का लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो किस हद तक पूरा हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ना कि उसको Mm-hmm. 1+1=2 याद रहा या नहीं रहा, अनलेस कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है एंड ही इज प्रोड्यूसिंग व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड टू। सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमें शायद एक और कल्चर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जो कि मैं देख रहा हूँ फॉर लाइक पास्ट, इनफैक्ट आफ्टर कोविड मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा इनकरेज किया जा रहा है और यूनिवर्सिटीज उसको अडॉप्ट भी कर रही हैं, विच इज दैट एवरी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान मस्ट ट्रीट देयर स्टूडेंट्स एज देयर पार्टनर्स, Mm-hmm. राइट? हमें इस माइंडसेट को Yes. अगेन जो भी हायर एजुकेशन के डिसीजन मेकर्स हैं इन एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमें उनके माइंडसेट्स को चेंज करने की जरूरत है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के इक्वल पार्टनर्स हैं, इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं, इनफैक्ट द Yes. मोस्ट क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, राइट? सो और जितना आप अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे टू कोलैबोरेट विद फैकल्टी मेंबर्स एंड देयर Mm-hmm. पीयर्स to do research, to develop courses, and in fact आप अपने events के अंदर और different extra curricular activities के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं अभी, but still I Mm-hmm. think कि ये जो mindset है, we should treat our students as our partners is very critical. उसके अलावा एक्सपैंडिंग ऑनलाइन एजुकेशन टू रीच द अंडरसर्व्ड एरियाज अगेन इज वेरी Mm-hmm. चैलेंजिंग, और इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और इनफैक्ट बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, बिकॉज पीपल आर स्टिल रिलक्टेंट टू टेक ऑनलाइन कोर्सेज और उनको लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। क्योंकि Yeah. जो इंसान एक क्लासरूम में जिस तरह से चीजों को डिलीवर कर रहा है, जो फैकल्टी मेंबर, जो इंस्ट्रक्टर क्लासरूम में जितनी मेहनत से, इन पर्सन क्लासरूम में जितनी मेहनत से वो डिलीवर कर रहा होता है चीजों को, व्हेन इट कम्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो वो वीडियोस और जो कोर्सेज डेवलप किए जाते हैं वो ऑनलाइन ऑडियंस के अकॉर्डिंगली डेवलप किए जाते हैं, तो उसको Mm-hmm. दे ट्राई टू मेक इट वेरी मच इंटरेक्टिव, ताकि जो लिसनर्स और जो लर्नर्स हैं वो बहुत ज्यादा बोर्डम का शिकार ना हो और उनको जो जो ऑब्जेक्टिव है उस कोर्स का वो फुलफिल हो रहा हो। अगेन इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिकल रोल है, बिकॉज मेरा जिस इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक है, हमारे पास इंटरनेशनल डेलीगेशंस का बहुत फ्रिक्वेंसी से आना होता है, और जो Mm-hmm. सबसे मुश्किल इशू होता है हमारे लिए वो होता है वीजा उनका सिक्योर करना। और आए दिन जो है वो जो भी होम कंट्री का जो भी फॉरेन डेलीगेट हमारे पास आ रहे होते हैं, उनके होम कंट्री से उनको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जी दिस इज नॉट द सेफ एरिया टू ट्रेवल, और यहाँ पे आपकी जान को खतरा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनका टोटली माइंडसेट चेंज हो जाता है, और दे कैरी अ ग्रेट इम्पैक्ट विद देम जब वो यहाँ से जाते हैं। और एक बहुत अच्छा टूल जिसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, वो जब वहां पे बात करते हैं अपने पीयर से कि जी पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री और यहाँ पे आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल और वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो ये एक अगेन बड़ा पॉजिटिव बात है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को हमें थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है कि वो किस तरह से एकेडमिया को मजीद स्ट्रेंथन करे इन टर्म्स ऑफ getting visas and onboarding of Yes. foreign delegates, faculty members and in fact students, बिकॉज ये सबसे क्रिटिकल एरिया जो इंटरनेशनलाइजेशन में हम लोग अभी फेस कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बहुत Mm-hmm. लिमिटेड हमारे पास नंबर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, और जब तक वो बढ़ेगा नहीं हमारे पास डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स नहीं हो सकेंगे। सो जब आप फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ एक क्लासरूम में एक स्पेस में लर्न कर रहे होंगे, तभी आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लर्न करेंगे, आप उनकी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली सोचना शुरू करेंगे, वो आपके पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करेंगे, देन फिर वो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉस्टर हो पाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा माइंडसेट है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। आई एम विटनेसिंग के Mm-hmm. बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर इस वक्त मार्केट में दे आर स्ट्रगलिंग। सो हमें चाहिए कि बीइंग इंडिविजुअल्स हमें उन स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, इधर टू बाय देयर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स or by giving them some good advices. So there are always ways to support each other. So वो एक इकोसिस्टम हमें बना के देना है जहाँ पे हमारे स्टार्टअप्स का जो और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर सकें, तभी हमारी इकोनॉमी में वो बहुत अच्छे से पिच इन कर सकेंगे और हमारी इकोनॉमी में थोड़ी सी इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू होगी।
And my last point would be the continuous, support of faculty development programs and trainings to enhance faculty methodologies. क्योंकि देखिए, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की फ्लिप क्लासरूम्स की और इस तरह के डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स और डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं क्लासरूम में इंटरेक्टिव बनाने के लिए। आई थिंक हमें उससे थोड़ा सा इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की जरूरत है। हमें एक टिपिकल क्लासरूम सेटअप से आगे निकल कर सोचना चाहिए, जहाँ पे आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं फेसिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रक्टर, और इंस्ट्रक्टर इज जस्ट टेलिंग देम, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये डेफिनेशन है, ये हुआ, ऐसे हुआ। सो दिस इज नॉट द केस। हमें थोड़ा सा उसको इनोवेशन लाने की जरूरत है इन इन टीचिंग मेथडोलॉजीज में। और फैकल्टी मेंबर्स को चाहिए कि उसको जितना ज्यादा इंटरेक्टिव कर सकें, और उन उन स्टूडेंट्स को आपस में जितना एंगेज करेंगे उतनी उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, और वो अच्छे से चीजों को लर्न भी कर रहे होंगे, एंड इवेंचुअली दे विल बी एक्चुअली इक्विपिंग देमसेल्व्स फॉर द जॉब मार्केट, और प्रोबेबली फॉर देयर ओन स्टार्टअप्स। तो ये कुछ एरिया थे। उसके अलावा माइक्रो क्रेडेंशियल्स का आजकल बहुत ज्यादा बोलबाला है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी, और इनफैक्ट लोकल यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज्यादा इसको क्रिटिकली देखा जा रहा है। I think again we need to promote this culture as well. बाकी I'm pretty much hopeful कि हमारी higher education is doing pretty better than the rest of the countries, neighboring countries around us. So अगर हम इसी तरह मिलकर काम करते रहें, स्टूडेंट्स के साथ collaborate करके काम करें, every single stakeholder of a degree awarding institute is as important as anyone. Right, so chahe say it is the vice chancellor, or in fact anyone standing in the gate of the university is equally important, because उन सब का अपना एक बहुत critical role है। So मैं उस गार्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि that person is also a leader in himself, जो कि वहां पे right there right then decisions ले रहा होता है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत इंसान जो है वो यूनिवर्सिटी में ना एंटर हो जाए, या वो भी आपको एक डिसिप्लिन की सोच बता रहा होता है कि आप अपना कार्ड जरूर कैरी करें, ठीक है, और स्टफ लाइक दैट। सो एवरीवन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आप इन सब हमें सब के साथ एक इंक्लूसिव सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को और माइंडसेट को डेवलप करने की जरूरत है। Well, that's really true, sir. As you said, that collaboration between teachers and students and their critical thinking is really important. I think as we observe the international schooling system, their students are far more confident. They can say, they can ask anything. And if we look at our system, our students are quite afraid of teachers, a kind of, I would say that. And when a student become confident with their teacher, they can openly express their thoughts. They can openly tell teacher what they actually think. They can share their ideas. And when there is a kind of bridge between teacher and student, then it means that they are actually keeping some maybe amazing ideas in their heads, and they never came out. So that's really important, sir. Just to build on that and sharing my 2 cents on that, कि यहाँ पे जो क्रिटिकल रोल है, जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल रोल लाइज ऑन और इसका जो ओनस है दैट लाइज ऑन द इंस्ट्रक्टर और द फैकल्टी मेंबर, कि वो अपने स्टूडेंट्स को कितना ज्यादा एक तो एम्पावर कर रहे हैं, और उन्होंने उनको कितने फ्रीडम दी हुई है कि दे कैन एक्सप्रेस whatever they are thinking in their mind, right? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैकल्टी मेंबर्स भी इक्वली जो है वो अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करें and give them liberty to actually ask critical questions. तो तभी ये कल्चर फॉस्टर हो सकेगा। Definitely. I have another question, sir. It's maybe a bit different, but as I've observed that in Pakistan, maybe students are not that interested in space technology, as we have our own program, space program. But why are not they taking that much interest? I think I just came to know recently that Pakistan space program was, I think, third or fourth country in the world who had their own space program, but still we are lagging behind, and we have no progress in that. What do you think is the reason behind that? So if I'm not wrong, Sparko was developed in 1964 or 65. हमारे नेबरिंग कंट्री से पहले हमारे पास स्पेस प्रोग्राम था, but if we all have witnessed कि our neighboring country is actually orbiting the moon, or they are talking about space, और हम अभी तक जो है वो बहुत ग्राउंड लेवल की चीजों को सोच रहे हैं। इसमें अगेन बहुत मेजर स्टेक होल्डर्स हैं,
और गवर्नमेंट लेवल पे चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है बड़ी क्रिटिकली, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेने की जरूरत है. द अदर डे आई वाज लुकिंग एट अ वीडियो ऑफ अ वेरी यंग किड फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, और वो बड़ी वायरल हुई है आजकल वीडियो, जिसमें दैट लिटिल किड इज टेलिंग द निटिग्रिटीज ऑफ चंद्रयान 3 के वो Yeah. उसकी स्पीड क्या थी, और वो किस रेशो पे ऑर्बिट कर रहा था, और किस स्पीड पे वो लैंड हुआ. एंड दैट वाज अमेजिंग फॉर मी टू लुक एट समवन हु इज वेरी यंग, और उसके पास इतनी ज्यादा डिटेल्स थी. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो डिटेल्स शायद मेरे पास भी नहीं थी, और मेरे से जो सीनियर लोग हैं शायद उनके Definitely. पास भी नहीं होंगी, जिस तरह से उन्होंने अपनी यूथ को इक्विप किया हुआ है, एंड दे आर इनकलकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि उनके पास Yeah. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं देखने के लिए. सो आई थिंक हमें भी थोड़ा सा इन चीजों को प्रैक्टिकली लेकर चलना है. आई नो सम ऑफ द इंडिविजुअल्स जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि ये इंडिविजुअल्स के बस की बात नहीं है. Yes. इंडिविजुअल्स तो काम Yes. कर रहे हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम करने की जरूरत है. यूनिवर्सिटीज को ये पूरा कल्चर अडॉप्ट करने की जरूरत है, और जो हमारे लोकल इदारे जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कराची बेस्ड कुछ इदारे हैं जो कि स्पेस एंड एरोस्पेस एंड एरोनॉटिक्स में काम कर रहे हैं. हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो कि काम कर रही हैं. इनको चाहिए कि एकेडमिया के साथ कोलैबोरेट करें और वहां पे अवेयरनेस सेशंस क्रिएट करें, और स्टूडेंट्स को एक्चुअली दे नीड टू अवेयर स्टूडेंट्स के यहाँ पे इन डोमेन्स में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. सो Yeah. अगर आप एक बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं इन एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस, और इस तरह के सिमिलर आप बीएस प्रोग्राम में अगर इनरोल करते हैं, तो आपके पास आगे क्या अपॉर्चुनिटी है. द प्रॉब्लम इज कि आज के स्टूडेंट को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर मैं एविएशन का बीएस कर रहा हूँ, या मैं एरोनॉटिक्स का बीएस कर रहा हूँ, या मैं एरोस्पेस का बीएस कर रहा हूँ, तो मैंने आगे क्या करना, राइट. सो जब तक आप Yes. उनको ये नहीं बताएंगे कि ये प्रोग्राम लुक्रेटिव क्यों है, एंड व्हाई वन शुड एनरोल देमसेल्फ इन दीज सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स, तो वो अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करेंगे अपने आप को इन इन प्रोग्राम्स में एनरोल करने के लिए. सो अगेन ये बस किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये अगेन कोलैबोरेटिव लर्निंग का प्रॉब्लम है, जिसमें एवरी स्टेक होल्डर शुड कम टुगेदर एंड वर्क इन दिस डायरेक्शन. Very well explained, sir. Thank you so much. And this was very, fruitful session. We really enjoyed it. And थैंक यू but सो we मच are फॉर हैविंग मी. इट वाज अ प्लेजर, और आप लोगों ने जिस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, दैट वाज सुपर. सो गुड जॉब टू thank यू you so much, गाइस. sir. कीप इट अप. Thank you so much, sir. Thank you so much. We are very delighted and thankful for your valuable time. Thank you so much. My pleasure. Well, listeners, that's all from our side. And this was, I hope you really enjoyed this session. And stay tuned to my FM 101.8 and your host Humda Mahamalvi and Aisha Aisha Siddiqa. Siddiq. We are signing off. That's all.